Hello everyone, good morning, good afternoon, good evening. So in this CFA revision series, we are starting with the corporate issuers that has been recently amended by the CF Institute. And first we are starting with the reading 22. So I will be preparing video on reading by reading basis. So in the first reading that has been under the corporate issuer that talks about the organizational form. What are the different form like sole proprietorship, partnership, general or the limited partnership, and the corporate, the companies, and what are the features and what will be the ownership type under different types of organizational forms. Okay, so we'll be talking about whether it's a separate legal entity or not, whether they have a limited liability or not, and what will be the treatment of profit and loss, like is that or whatever the profit that they are earning, will it be treated as a personal income or will be taxed under that head other and other sources. Okay, so we are starting with the form of business structure. So basically four forms of business structures are being introduced in this reading. So first one is the sole proprietorship. So what is a sole proprietorship? That is basically the business owned or operated by an individual, and he's personally responsible for all the managerial operations of that business, right? And whatever the profit and whatever the liability is there, it's an unlimited liability. Like whatever the business, like if there is a liability of around 100 rupees, like, and you have the assets of 80 only, so the business जो owner है वो that will bring 20 rupees from its home only, personal assets को sell करके लाएगा, but he has to pay off 100 rupees only. He can't say like I have 80 rupees only and I'm responsible to pay 80 only, right? उसको 20 rupees arrange करने ही पड़ेंगे. That is the unlimited liability. And whatever the profit or loss जो भी होगा, he will receive all 100% राइट्स है उसके ऊपर. एंड वट एवर द प्रॉफिट दैट विल बी अर्न इन द सोल प्रोप्राइटरशिप, वो एज अ पर्सनल इनकम टैक्स होगा. पर्सनल इनकम मतलब पीजीबीपी के अंदर आप इसे टैक्स करोगे डायरेक्टली. Next, when we talk about the general partnership, there is a normal partnership agreement, whatever the or the partnership that we have even read in class 11th or 12th. Basically, what is the partnership agreement? That is basically define the partner's responsibilities. So when two or more partners come together and start a business and they have entered into agreement, that is known as a partnership agreement. And whatever the roles and responsibility that are being decided, वो partnership agreement mention करते हैं. एंड एग्रीमेंट वो रिटर्न भी हो सकता है, ओरल भी हो सकता है, वट एवर द इंसिडेंटल भी हो सकता है थ्रू द एक्शंस ऑफ द पार्टनर्स. एंड यहाँ पे भी लाइबिलिटी अनलिमिटेड ही होगी. एंड वट एवर द प्रॉफिट दैट विल बी अर्न इन द पार्टनरशिप फर्म, that will be allocated between the partners basis the partnership agreement. And whatever the profit that you are allocating to the partner, that will be taxed as a personal income. Next, we are talking about the limited partnership. So limited partnership, like in class 11th or 12th, you must have heard about the sleeping partners and normal partners. So limited partners are like a sleeping partners only. मतलब they are the persons जो आप day to day operations के लिए इतने capable नहीं है, या they don't have time to run the business or manage the day to day operations of the business. बस हाँ, they are the one who who give the finances to the business. So these are only responsible for the investment in the partnership. ये खाली अमाउंट आपको पैसा देंगे अच्छे से. एंड वेयर एज अ जनरल पार्टनर, दीज आर द वन हु ऑपरेट द बिजनेस, दे मैनेज द डे टू डे फंक्शन, मैनेजरियल ऑपरेशंस को बेसिकली बीइंग मैनेज्ड बाय द जनरल पार्टनर्स ओनली. एंड बोथ द पार्टनर्स हैव अनलिमिटेड लायबिलिटी. आप ये नहीं बोल सकते कि आई हैव लिमिटेड लायबिलिटी. नो, यू हैव बोथ द पार्टनर्स हैव अ लिमिटेड लायबिलिटी, अनलिमिटेड लायबिलिटी, सॉरी. Now, the general partner, these are responsible for managing the business. And because they are doing or they are putting an extra effort in the business, so they are receiving the large proportion of profit in than the limited partners. So limited partners have invested the finances only, but where the general partners have also invested the finance, but in a smaller proportion as compared to the limited partners, because they are not putting 100. Like for limited partner they must be investing 100, so general partner might be investing 20 or 50, whatever as per the capacity, but they are also doing the operations, managing the operations, so they are responsible for managing the business, and they will be receiving a large proportion of profit. And whatever the profit that will be allocated in this type of arrangement will also be taxed as a personal income only. And these are the limited partners are generally not involved in appointing or removing the general partners, नहीं होते basically वो, and they just claim the profit proportionate to their investment. Now, whatever the profit that will be distributed between the limited partners and the general partner, that will be based on the agreement that is being agreed to. Now, fourth one is the corporation, or what we say the limited company.
So this is a form of a separate legal entity. So this is the type of form of business structure that is being termed as a separate legal entity, where owners and managers are two different types of things. Here, shareholders have a limited liability. For example, you invest in a company, for example, Reliance. So you are investing in Reliance Industries Limited, and you have invested amount worth rupees 10,000. And suppose Reliance Industries Limited goes bankrupt, and so what will be so basis the कंडीशन सो यू आर ओनली रिस्पॉन्सिबल फॉर 10,000 ओनली या तो आपको 10,000 मिलेंगे या नहीं मिलेंगे सो इफ इन केस कंपनी गोज बैंकक्रप्ट सो वैल्यू ऑफ शेयर्स विल बिकम जीरो सो यू आर नॉट द वन जो अपने घर से पैसा लाके आप रिलायंस इंडस्ट्रीज को दोगे एंड वो बोलोगे कि आप उनको आगे पे कर तो नहीं होगा वो ऐसा सो आप खाली रिस्पॉन्सिबल हो टिल द वैल्यू ऑफ द शेयर सो यहाँ पे आप लिमिटेड लाइबिलिटी आती है आपकी सो जो हम बात करें थे ऊपर थ्री केसेस में इन द सोल प्रोप्राइटरशिप इन द नॉर्मल पार्टनरशिप एंड द लिमिटेड पार्टनरशिप में both of the three form of business structure have unlimited liability but in case of the corporation or a limited company यहाँ पे एक limited liability आती है right यहीं पे आते हैं सिर्फ लिमिटेड लाइबिलिटी नाउ मूविंग फॉरवर्ड कंपनी डिस्ट्रीब्यूट करती है अपने जो भी प्रॉफिट होते हैं शेयर होल्डर्स को इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड और एवरीथिंग एंड यहाँ पे जो सोर्सेज होते हैं कैपिटल के इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड हो सकता है यहाँ पे इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड नेक्स्ट व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ कैपिटल तो कंपनी कहाँ से अरेंज करेगी पैसा इन द फॉर्म ऑफ डेट एंड इन द फॉर्म ऑफ इक्विटी नाउ मैनेजर्स एंड ओनर्स आर सेपरेट क्यों बोल रहे हैं बिकॉज इन्वेस्टर्स लाइक अस फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ पर्सन जो इन्वेस्ट कर रहा है बाय कर रहा है शेयर तो ये इन्वेस्टर बन गया ही बिकम द शेयर होल्डर ऑफ अ कंपनी बट ही कांट इन्फ्लुएंस द डे टू डे ऑपरेशंस ही कांट से कि आप यहाँ पे इन्वेस्ट करो आप यहाँ पे नहीं करो मतलब बेसिकली इफ it belongs if it concerned about the big decisions like ऑडिटर को कैसे अपॉइंट करना है नहीं करना है डिविडेंड कितना डिस्ट्रीब्यूट करना है नहीं करना है तो उसके लिए ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग्स या फिर हम बोलते हैं कि एजीएम या फिर ईजीएम जो होती है हमारे पास दैट वी यूज टू कॉल यहाँ पे एजीएम ईजीएम होती है बट नॉर्मल डे टू डे ऑपरेशंस के लिए शेयर होल्डर कान इंटरवीन ऐसा तो बहुत मुश्किल हो जाएगा बिकॉज रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड हैविंग लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ इन्वेस्टर्स सो हर किसी से पूछना कि ये चीजें करनी है कि नहीं करनी दैट इज नॉट पॉसिबल so buy a share, become a shareholder, and we can't influence the day-to-day operations of the business. So what do shareholders do? They appoint a board of directors, and board of directors hire the senior managers, and senior managers are the one who operate the company. And both the board of directors and senior managers operate in the interest of the shareholder. नेक्स्ट व्हेन वी टॉक अबाउट द कॉर्पोरेशन तो कॉर्पोरेशन दो तरीके से हो सकती है वेदर इट्स अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी और अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी सो व्हेन आई टॉक अबाउट अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी it means the shares are publicly traded and listed on a stock exchange like BSE or NSE and in case of stock exchanges in case of a foreign company. Now what do we mean by the private listed company? Private listed company that is mean लिमिटेड नंबर ऑफ शेयर्स होते हैं एंड रेस्ट्रिक्शन ऑन द ट्रांसफर ऑफ शेयर्स होते हैं एज कम्पेयर टू पब्लिक लिमिटेड कंपनी बिकॉज पब्लिक लिमिटेड कंपनीज के शेयर्स फ्रीली ट्रांसफरेबल होते हैं इजीली ट्रेड कर सकते हैं बिकॉज दे आर लिस्टेड ऑन अ स्टॉक एक्सचेंज ओके जी नेक्स्ट इन केस ऑफ कॉर्पोरेशन डबल टैक्सेशन अराइज हो सकता है बिकॉज लेट सपोज कंपनी इज अर्निंग अ प्रॉफिट ऑफ रुपीज 100 सो ऑन 100 कंपनी के ऊपर भी टैक्स लगेगा ओके जी सो कंपनी के ऊपर टैक्स लगेगा एंड वट एवर द प्रॉफिट होंगे दैट इज अर्निंग पर शेयर आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे डिविडेंड के रूप में और पार्ट ऑफ द अर्निंग आप उसको रिटेन करोगे इन द फॉर्म ऑफ रिटेन्ड अर्निंग्स सो वट एवर द डिविडेंड दैट यू आर डिस्ट्रीब्यूटिंग टू द शेयर होल्डर्स वो उनके अंडर दी हेड अदर सोर्सेज में उनके उसमें टैक्स होगा सो इन केस ऑफ कॉर्पोरेशन डबल टैक्सेशन राइज हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन द लोकल लॉस ऑफ द कंट्री जहाँ पे कंपनी लिस्टेड है तो यहाँ पे आप टैक्स करते हो कंपनी की अर्निंग को और शेयर होल्डर को जो मिलता है वो भी डिविडेंड के रूप में टैक्स हो जाएगा नाउ वट एवर द शेयर होल्डर्स के पास राइट्स होते हैं सो शेयर होल्डर्स हैव राइट वोटिंग राइट्स टू सिलेक्ट द बीओटी राइट सो व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ डबल टैक्सेशन का इम्पैक्ट अब कब आएगा जानते सपोज कॉर्पोरेट इनकम है ठीक है वट एवर द इनकम दैट इज बीइंग अर्न बाय कंपनी वो टैक्स होगी ही होगी एंड वट एवर द डिस्ट्रीब्यूशन दैट इज बीइंग डन बाय द कंपनी इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड वो डिपेंड करेगा डिपेंडिंग अपॉन द लोकल लॉस so effect of double taxation कब ज़्यादा आएगा when larger fraction of profit is distributed as dividend so you should remembering this point this is good point so whatever the profit जो आपने earn किया है और अगर आप उसका मेजर प्रोपोर्शन आप ज़्यादा ही डिस्ट्रीब्यूट करो इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड तो कंपनी के ऊपर तो टैक्स लगेगा ही लगेगा और उस ज़्यादा प्रोपोर्शन के ऊपर भी शेयर होल्डर्स पे करेंगे टैक्स इन द फॉर्म ऑफ पर्सनल इनकम इन द फॉर्म ऑफ द पर्सनल इनकम टैक्सेस तो वहाँ पे डबल टैक्सेशन का इफेक्ट ज़्यादा आने वाला है एज कम्पेयर टू द स्मॉलर फ्रैक्शन ऑफ द प्रॉफिट दैट इज बिंग डिस्ट्रीब्यूटेड बाय द डिविडेंड इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड राइट
Now, when we talk about the private and public owned corporate issuers, so what in the form of public company that is being a listed company, stock exchange पे listed होती है. Stock exchange क्या होता है? Basically जहाँ पे platform होता है, basically where you trade, जो buyer and sellers को ट्रेड करने में हेल्प करता है. एंड इन दिस जो प्राइसेस हैं शेयर्स के एंड वॉल्यूम है वो ट्रांसपेरेंट होते हैं. यू कैन सी व्हाट आर द प्राइसेस ऑफ द शेयर्स जो भी चल रहा है, कितना ऊपर नीचे जा रहा है, एंड व्हाट आर द वॉल्यूम जो भी ट्रेड हो रहे हैं राइट नाउ एट अ पर्टिकुलर मोमेंट. नाउ शेयर होल्डर्स जो भी हो सकते हैं जो इन्वेस्ट कर रहे हैं किसी पर्टिकुलर कंपनी में, वो कोई भी हो सकता है. इस पर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है. इंडिविजुअल भी हो सकता है, कॉर्पोरेशन भी हो सकते हैं, गवर्नमेंट भी हो सकता है, एनपीओ भी हो सकता है. एनीवन कैन इन्वेस्ट. एंड नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट टर्म. वट एवर द शेयर जो एक्टिवली ट्रेड हो रहे हैं, एक्सेप्ट जो इनसाइडर्स ने होल्ड किए हुए हैं, स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर्स ने, स्पॉन्सर्स को, अगर जो इन्होंने होल्ड नहीं किए हुए, एक्सेप्ट दीज, जो भी एक्टिवली शेयर्स ट्रेड किए जा सकते हैं इन सेकेंडरी मार्केट, इन secondary market. So whatever the share that can actively trade in the secondary market are known as companies free float. Whatever the shares that can be traded, actively traded, these are known as the companies free float. That is percent on the that is being and it is being compared with the percent of total outstanding shares. Now, when we talk about the private limited company, these do not trade on the stock exchanges. इनकी जो वैल्यू है, these are not readily available to you. आपके पास as such readily available नहीं है. प्लस आपके जो ट्रांसफर है शेयर्स के बिटवीन द इन्वेस्टर्स भी वो थोड़े बहुत डिफिकल्ट होते हैं एज कम्पेयर टू द पब्लिक. क्योंकि पब्लिक लिमिटेड कंपनी में क्या है, स्टॉक एक्सचेंजेस पे लिस्टेड है शेयर्स एंड आप इजीली ट्रेड कर सकते हो. एंड एज कम्पेयर टू द पब्लिक यहाँ पे भी रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स एज सच इतनी नहीं है. फ्यू रेगुलेटरी ट्रांस रिक्वायरमेंट्स होती हैं. एंड यहाँ पे आप कैपिटल कैसे रेस कर सकते हो, यहाँ पे आप कैपिटल प्राइवेट इन्वेस्टमेंट के थ्रू आप रेस करते हो. बेसिकली प्राइवेट इन्वेस्टमेंट के थ्रू कैसे, यहाँ पे वो इन्वेस्टर्स पैसे लगाते हैं जो कि जो वेल्दी इन्वेस्टर्स हैं एंड उनको हम क्या बोलते हैं, ए क्रेडिटेड इन्वेस्टर्स. दीज आर द इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स और हाई नेटवर्थ इन्वेस्टर्स और इंडिविजुअल्स, राइट. नाउ there's a new term, this is also important point. पेपर में एमसीक्यू के चांसेस यहाँ से ज़्यादा हैं. यहाँ पे बोलते हैं कि प्राइवेट कंपनी जब पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट होती है, इसको हम क्या बोलते हैं, गो पब्लिक. व्हाट वी कॉल इट एज अ गो पब्लिक टर्म. ओके जी. नेक्स्ट, अब तीन तरीके से आप प्राइवेट कंपनी को यू कन्वर्ट द प्राइवेट कंपनी इनटू पब्लिक कंपनी. ईदर इट कैन गो फॉर एन आईपीओ और अ डायरेक्ट लिस्टिंग और अ स्पेशल पर्पस एक्विजिशन कंपनी. ये एक न्यू टर्म है, इसको भी देखते हैं. बट उससे पहले ही दो देखते हैं जो कि बहुत ही सिंपल है, कुछ नहीं है. दैट इज इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग इज नोन एज द, बेसिकली यू आर listing your shares on the stock exchange, you are listing your company on the stock exchange, but इसमें आप you are raising a capital for some purposes. So यहाँ पे आप क्या करते हैं, here you used to engage the service of investment banking or I would say the underwriters. यहाँ पे you used to have these things. Let me write it properly यार. ओके जी. एंड पोस्ट लिस्टिंग जो ओनर्स होते हैं, व्हाट आर द शेयर होल्डर्स दैट हैव took or buy the shares of the company, they can sell the shares easily on the stock exchanges. And the company which is going for an IPO, it should meet the exchange specific requirements. Now when we talk about the direct listing, here the company don't raise any new capital, कोई new capital यहाँ पे raise नहीं होगी, and it's quicker than IPO, and there is no requirement of underwriter because you are not raising any capital. Now, when we talk about the special purpose acquisition company, basically it's a corporate structure जो basically क्या करता है, acquire करता है private companies को. प्राइवेट कंपनीज को आप एक्वायर करते हो. सो बेसिकली व्हाट इज डन इज लाइक, देयर इज वन एसपीएसी जो रेस करता है कैपिटल थ्रू एन आईपीओ. So you go into an IPO, you raise the capital, and what is the purpose? Basically, you will be acquiring the private companies, right? And now, whatever the money that you have raised through an IPO, you put in a trust, and the trust will acquire a private company. Now, this is a something new concept that is not, मतलब that is been I would say trending in the worldwide, but as such India में कोई rules and regulations इसके लिए भी नहीं है इतना. Actually ये worldwide है, globally this is the something practice that has been followed, but in India it's not really under the, अभी ऐसा इतना फॉलो नहीं हो रहा है. ओके जी. नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट द एसपीएसी, एसपीएसी ने आईपीओ के थ्रू पैसा रेज किया, पुट किया ट्रस्ट में, एंड एक्वायर किया प्राइवेट कंपनी को. एंड व्हेन द आईपीओ इज कमिंग, सो व्हेन एक्वायरिंग कंपनी, एक्वायर कंपनी इज नॉट आइडेंटिफाइड एट द टाइम ऑफ आईपीओ, एंड दिस एसपीएसी आर आल्सो नोन एज द ब्लैक चेक कंपनीज. दीज आर द
ब्लैक चेक कंपनीज, दिस इज इंपॉर्टेंट टर्म जो एमसीक्यू में आ सकते हैं। तो एसपीएसी कंपनीज आर द ब्लैक चेक कंपनीज एंड व्हेन दे कम फॉर एन आईपीओ, व्हेन दे रेज कैपिटल थ्रू एन आईपीओ, उस टाइम पे व्हाट ऑल कंपनीज और विच कंपनी दे विल बी एक्वायरिंग, दिस इज नॉट आइडेंटिफाइड एंड दे पुट मनी इनटू अ ट्रस्ट and then acquire a private company. Okay ji. So this is all about this reading, and whatever the topic that we have read is like basically बहुत easy topic थे, like what are the different form of business structure, sole proprietorship, general partnership and limited partnership. इन तीनों में अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है पार्टनर्स की, इंडिविजुअल्स की, एंड व्हेन वी टॉक अबाउट द कॉर्पोरेशन, दिस इज सेपरेट लीगल एंटिटी, यहाँ पे लिमिटेड लाइबिलिटी होती है, कंपनी डिस्ट्रीब्यूट कर सकती है व्हाट आर द प्रॉफिट टू द शेयरहोल्डर्स इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड. एंड व्हेन वी टॉक अबाउट द इंपॉर्टेंट थिंग इज लाइक डबल टैक्सेशन का इफेक्ट आ सकता है इन द फॉर्म ऑफ कंपनी विल बी पेइंग टैक्सेस ऑन देयर इनकम, वट एवर द इनकम दैट दे हैव अर्नड ड्यूरिंग द ईयर, एंड the shareholders will also be taxed on the dividend part. And the effect of double taxation on corporate income will be more when they will be distributing the large fraction of profit as in the form of dividend. And when we talk about the private and when then we talk about what is the private company and what versus the public company. And lastly, when we talk about, we have talked about the private company being converted into the public company, this is known as the go public. There are three ways to convert private company into public companies, known as the IPO, direct listing, and the SPAC. SPAC companies are also known as the black check companies. Okay, G. So this is all about reading 22. So now that's it for this reading, and see you in reading number 23. तब तक के लिए bye bye.